the responses you guys give is what makes us like the actors, the feedbacks and everyone. You guys make us. मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अब एक्चुअली वो इस फिल्म के बाद वो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सेस मिल रहा है. हाय गाइस, फिल्म फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ एक ऐसे शख्स जिनको देखने के बाद आपके अंदर एक तरह से जो घुटन होती है या फिर जो लाचारी होती है वो आप फील करने लगेंगे, क्योंकि उन्होंने एक्टिंग ही ऐसे की है। इस वक्त है मेरे साथ दोस्तों आडू जीवितम यानी कि द गोट लाइफ के वन ऑफ द मेन एक्टर्स, जिनका नाम है के आर गोकुल। उन्होंने हकीम का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है एंड ही हैज जस्ट नेल्ड इट। थैंक यू सो मच के आर गोकुल। हेलो कैसे हैं आप? हेलो, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अब एक्चुअली वो इस फिल्म के बाद वो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सेस मिल रहा है ऑडियंस के और सबके, इंडस्ट्री के बड़े बड़े आदमियों की, सबका ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सेस मिल रहा है. सो इसीलिए मैं प्राउड हूँ, मैं खुश हूँ. You know, after watching your performance and especially doing this conversation, I just feel like I should have some water. स्पेशली डिहाइड्रेशन वाली जो वाइब है ना, वो क्रिएट हो गई थी थिएटर के अंदर। मुझे लग रहा था व्हाट इज द रियल टेस्ट ऑफ द वाटर आफ्टर वॉचिंग योर परफॉर्मेंस एंड स्पेशली पृथ्वी सर। Yeah, of course. Yeah, it's we are like worked hard, like experimented so much for this kind of to portray the feelings of dehydration and tiredness, the fatigue kind of things, to portray that things on the screen. So, yeah, I think I'm really happy that all the hard work we have done has really राइट। paid off. I think you have done a significant transformation for your character, especially. You have increased the weight and also reduced the weight for the character for different situation in the film. How did you made this possible basically for your characters? ओके, फॉर द फर्स्ट शेड्यूल, पहले शेड्यूल में मुझको थोड़ा फैटी होना था. वो कैरेक्टर डिमांडिंग ऐसा ही था, तो Hmm. मैं उसके लिए खाना शुरू किया. ठीक है, Right. आई जस्ट स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट. Right. I could eat whatever I want. Okay, and from my neutral weight I've gained till 64 kgs for the first schedule. And after the 3 year sequence and everything, I just had to I just had to be like really thin. You Right. saw the movie, right? Right. So Right. for that, yeah, I've just prepared something. I've just prepared a diet. Like Hmm. prior to the shooting, 4 months prior to the shooting, I've Hmm. just made a plan. In the first month, Hmm. I ate like 1500 calories. Second Hmm. month, 1000 calories, and third month 500 calories. And Hmm. but still there was something flesh in my cheeks, okay, that needed to be weared off for the Hmm. character. So Hmm. I just pushed my limit. I did water diet for the last 15 days. That's like water and black coffee for the 15 days, and I Hmm. collapsed in the third day itself. I just fainted in my room on the third day. And yeah, and after that I've just the character have felt. I experimented. I tried to experiment what the character have felt. I Hmm. tried not bathing for 15 days. I ate like him, like a caboose with water. I ate like him, and I Hmm. tried to like feel what he must have felt during those Right. days. So Right. if I didn't felt like a 10 percentage of what he felt, I couldn't be like able to do portray. I Right. couldn't Right. do justice to that role. So Right. Right. that's what I did. That's what I did. Experimented a lot. Really, really, that's that we can say that's based on a true incident on also a novel, Yeah. and the movie is fully an adapted screenplay। और इस तरह की जब फिल्म होती है तो जैसा आपको कैरेक्टर ने एक्चुअली में झेला है उस तरह आपको पोर्ट्रे करना पड़ता है, और वैसा आपने बिल्कुल किया। वो लग रहा है आपके कैरेक्टर से। हाँ. पृथ्वी सर के साथ वो जो आपका इक्वेशन था मुझे कुछ अलग ही नजर आया, हाँ. स्पेशली डेजर्ट में। हम तो
अलग अलग जॉनरास वाली फिल्में होती हैं, कुछ हम्म, कॉमेडी होती है, कुछ अलग सिचुएशन होती है। उन उन फिल्मों में हम सपोर्टिंग कास्ट के जो रोल्स होते हैं और मेन कास्ट के साथ उनकी जो जुगलबंदी होती है हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं। हम्म। ये टिपिकल सिचुएशन में आपने पृथ्वी सर के साथ एक इक्वेशन क्रिएट की है, उसके लिए आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया और पृथ्वी सर के साथ काम करना आपके लिए क्या एक्सपीरियंस रहा है बेसिकली? एक्चुअली फिल्म में मेरा बड़ा भैया है नजीब, हकीम का बड़े भैया है ना, नजीब। वो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन में हम जैसे भी था ऐसे ही था। ठीक हम्म। है। वो मेरे को एक छोटे भैया की तरह ही ट्रीट किया है सब। वो राइट। इसकी तरह केयरिंग नर्चरिंग सब पैम्परिंग किया वो सब। वो पहले एट द फर्स्ट ही जस्ट ट्राई टू कंफर्ट मी as an actor. He tried to tell me that you are also doing the kind of job I'm doing. You are an actor too. You are my co-actor. So that's how he comforted me at first. I think, and from the scenes what we did together, it was like a give and take policy. He was giving a lot of energy. He was acting in front of me. I'm really I really admired his work. Uh, like before Aadujeevitham, I was a fanboy of him. In my childhood, I've grown up watching his Yeah, film. I have seen some pictures. Yeah. I've So seen some of the pictures with him. in the scenes, like it was a give and take policy. He was giving a lot of energy, so I couldn't like I. If he's that giving me that much kind of an energy, what can I do? I should give it back. And he was like giving back, and I'm taking it. I'm Mm-hmm. processing it. I'm giving it. It was kind of an organic feeling every time. Yeah, What? and Yeah. we can see it. The acting and the performance in the film was like a natural Mm, and flawlessly आपने उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है। mm, वो सबसे बड़ी बात है और लोगों को पसंद आ रही है। mm, और मैंने देखा है जो फीमेल है या फिर फीमेल ऑडियंस है mm, या फिर कुछ बच्चे हो गए उनकी, mm. वो रो रहे थे। वो Yeah. रो रहे थे और आपका जो कैरेक्टर, आपका जो सीक्वेंस आता है Yeah. उसमें तो हमने बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील किया है। Yeah. क्या इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए आपको कुछ अलग बातें बताई गई थी Yeah. जिसको आपने ध्यान में रखा, उसको बाद में पोर्ट्रे किया? Mm, आपके जो लिप्स हैं, mm, आपके चेहरे की जो रूपरेखा है बिल्कुल बदल चुकी थी। mm. क्या कहना चाहेंगे उस पर? वो वो वाला सीक्वेंस है ना, उसके बारे में ब्लसी सर है ना डायरेक्टर हमारा, उसके वो सीन का एक क्लियर विजन था कैसे होना है ऐसे। वो ये सीन शुरू करने के पहले 15 राइट। मिनट्स मेरे को बात किया था इस सीन के बारे में। वो हकीम के पहले का सब जर्नी के बारे में वो सब मेरे को बता लिया था। और मैं व्हेन आई वाज इन एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन नेशनल सर्विस स्कीम, आई आई like worked on a like mental institution, mental hospital in Kozhikode, Kudirevattam. So I've observed a lot of persons like grinding teeth kind of a ओके। mannerism from there. So I thought I should incorporate that kind of mannerism into the character, because the character must be feeling that kind of a feeling or emotion too. So I just asked advice to Blasi sir, and he said, "Yeah, do it. That would be good." And there's a kind of another mannerism of seizures. I think you noticed the seizures. That character is having seizures, and I have a haunting memory of in my childhood that when I was in assembly, like school assembly, I was standing. My one of In my your friend, real life, you think? in my Oh, real, okay, yeah. okay, When I was in fifth standard, my okay. friend collapsed having a seizure, and that's a haunting memory of my Gokul's personal life. So I just incorporated that into the character, and yeah, I think it worked well. It showed well, I think, and everyone was praising me so much. Whole crew, Blasisa, Raju and Prithviraj, Jimmy Chan, like Jimmy Jean Lewis, and Okay. everyone, every crew member was praising me because of that kind of mannerisms and things I pulled off. So I'm really grateful for that, actually, for the compliments, because for a budding actor like me, it means a lot. Yeah, just because of that, it has created a huge impact for all the cinema viewers, especially. And हम सोच रहे हैं कि यार इस तरह के जो सिचुएशंस होते हैं Mm, उसमें अगर हम चले जाते हैं तो क्या होता है, स्पेशली यू नो
जो फ्रीडम होता है, उसकी जो फीलिंग होती है, लोगों को पता चल रही है, एक इम्पैक्ट जो होता है ना सिनेमा का ऑडियंस पर, वो जा रहा है, वो ट्रांसलेट हुआ है, हाँ। एक्चुअली में कन्वे हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? और लास्ट में आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस हिसाब से फिल्म को सक्सेस मिल रही है, उस पर भी आपका क्या कहना है? वो इस ये फिल्म तो हम 16 years, Blasisa have been working for this film for like 16 years, and I was just first auditioned for this film at I think 2017. Actually, I've just joined the degree college, and I've got selected by through an audition. So I think the way so the that years of hard work clearly like portrayed in the film. In each and every frames, we can see that that's so much details. There's so much hard work. There's so lot of thought process involved in the pre-production work. So all those works and all those things, I think that's why it impacted so much people. And of course, it's a real life story. It's a best-selling novel, but the way Blasisa portrayed the character Najib, Hakeem, and Jimmy, the Khadri, everyone, every character. I think that's why it impacted. So I think you said it yourself. You had the feeling of dehydration when you're watching the film, right? So I think for this impact, yeah, I think that's a lots of years of hard work, and I just want to say to those who loved Hakeem, Najib, and everyone, the audience. I just want to say I just want to thank everyone from the bottom of my heart because uh, for me personally, Hakeem portraying Hakeem, I enjoyed each and every process of it. I didn't regretted anything because I just had to give my all in, and the overwhelming responses I'm getting from audience, and I'm getting a lot of love from outside. When I go outside, Right. I'm just, yeah, everyone is hugging me and praising me. I just love those feelings. The audience's emotions. I'm just glad that I did this role and everyone is loving me. Yeah. Okay. So lastly, your personal feelings or comments to all the audience who Mm, have watched the film and also they are planning to watch this cinema. mm, So what's your final wordings for them? mm. So You as a, yeah, I want to say to the audience that thank you from the bottom of my heart. The responses you guys give is what makes us like the actors. The feedbacks and everyone. You guys make us the actors, and that too right. for a new coming actor like me. All those love and praises I'm expecting it, like in each and every other film I'm going to do in the future. So I just want to say I'm really glad and thank you for the overwhelming and like reviews and the love audience have given me. And yeah, and I want to say to the everyone that do watch it in the theaters, that it's an theater experience. The whole crew, you should have know that it's sound design, the music, the dop, every department, not everyone, even the production boy did his part. He worked hard. It's our blood and sweat. So you should watch it in theater because as a cinephile, I'm a cinephile, and I could proudly say that it's a must watch theater movie, and you Hmm. must experience it in the theaters. You know, you just said a word cinephile. Yeah. Basically, हम जो cinephile होते हैं ना, डाई हार्ड फैन होते हैं सिनेमा के, Uh, और जो एक्टर वो खुद cinephile हो जाए और वो बाद में वो एक्टिंग को पर्दे पर उतारे, uh, पोर्ट्रायल करे, तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है, चार चांद लग जाती है, और आपने वो किया है. uh, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, कनेक्टिंग विथ मी, uh, एंड आई एम श्योर आपके ओपिनियन, आपके एक्सपीरियंस, uh, आपके रिएक्शन को सुनकर जो ऑडियंस है बहुत ही ज्यादा खुश होंगी, uh, एंजॉय कर रही होंगी आपके कन्वर्सेशन को. जिस हिसाब से सिनेमा को देखकर, आपके एक्टिंग को देखकर हमने एंजॉय किया, आपके इंटरव्यू को भी देखकर लोग एंजॉय करेंगे. सो yeah. गाइस, क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ है के आर गोकुल, उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया है, रिएक्शन दे दिया है. उनको आप किस हिसाब से प्रेज करना चाहते हैं जरूर लिखें हमारे कमेंट सेक्शन पर. क्या आपका ओपिनियन है इनकी एक्टिंग को लेकर, जरूर बताएं.
और दोस्तों देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर. दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ विद द finest actors we have right now, Kia Thank Gokul. you, thank you, thank you.